Hello kids, hello parents, welcome to our YouTube channel Mind the Mind. Today we are going to go with the part 2 of division sums. In previous modules we have seen how to solve the division sums. Now let us continue with it. First sum we have on the board is 25 divided by 5. So how we are going to divide this? First let us make the division sign. Then we are going to write the numbers, place the number on its place. 25 को डिवाइड करना है इसलिए वो अंदर लिखा जाएगा एंड 5 विल बी रिटन आउटसाइड. सो लेट अस काउंट द टेबल सो दैट वी गेट द आंसर एज 25. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. सो हियर वी गेट द आंसर एज 25. इन दोनों को माइनस करना है तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 0 0. एंड लेट मी मेक यू द रिमाइंडर. इसे क्या कहते हैं? डिविडेंड. यस, ये है डिवाइजर, ये है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम, देयर आर 12 मैंगोज. How many will each get if there are 6 friends? Means 6 friends है and एक बास्केट में 12 मैंगोज है तो each friend को कितना मैंगोज मिलेंगे? तो सिंपल 12 is the dividend. It will be written inside the sign. 6 will be the divisor. And now count the table of 6 to get the answer as 12. 6 1 are 6, 6 2 are 12. Right? So when we subtract this we get the answer as 0. So each friend will get 2 mangoes. Okay. Next we have how to divide 16 by 2. Means 16 is the dividend and 2 is the divisor. Right. So 16 will be written inside the sign. Means 16 हम अंदर की तरफ लिखेंगे and 2 outside. Okay. Now count the table of 2 to get the answer as 16. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16. So 2 8s are 16. So what we get the answer here as 8. Right? Moving on to the next one. Next we have if there are 10 pens. How to divide it among 2 friends? Means 2 friends के बीच में हम 10 pens कैसे divide करेंगे? Simple. Just make the division sign. 10 pens. So 10 will be written inside, right? And 2 friends है तो 2 will become the divisor, right? Now count the table of 2 to get the answer as 10. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, right? And when we subtract we get the answer as 0 0. Now 5 means each friend will get 5 pens. Simple. Moving on to the next one. Now we have 56 divided by 2. 56 बड़ा नंबर है, right? तो इसे हम सेम फॉर्मूले से करेंगे. First let us make the division sign. Then 56 we have to divide, so it will be written inside and 2 will be written outside. तो जब भी हम ऐसे सम्स करते हैं तो वी विल गो विथ ओनली सिंगल डिजिट फर्स्ट. तो फर्स्ट इज 5. ओके. देन 2 के टेबल में 5 आता है क्या? चेक करना है. 5 नहीं आता है तो उससे छोटा वाला नंबर लेना है. ठीक है. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3s are is 6. तो उससे छोटा क्या है? 2 2s are 4. तो यहाँ पे लिख देंगे 2 2s are 4 और व्हेन वी माइनस दिस यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 2 2s are 4 आएगा यहाँ पे. 2 2s are 4, 5 में से 4 गया 1 बच गया, ब्रिंग डाउन 6. ठीक है. तो यह बन गया 16. नाउ गो विद द टेबल ऑफ 2 टू गेट द आंसर एज 16. तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16. Right? So here we get the answer as 0 0. So 56 divided by 2 gives you 28. Simple. Let's go with the different examples. Next we have 72 divided by 3.
सेम पहले हमें वही करना है साइन, देन पोजीशन ऑफ द नंबर्स 3 डन. नाउ को सिंगल डिजिट नंबर लेना है इनसाइड वाले में. नाउ 72 7 3 के टेबल में 7 आता है या नहीं चेक कर लो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. नो 7 डजंट कम. देन टेक द स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर ले लो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा 6. When we minus this, we get the answer here as 1. Bring down 2. So it becomes 12. Now 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. So when we subtract this, we get the answer as 0 0. Simple. We have 44 divide by 4. Same process. First make the sign, then place the numbers. ठीक है? Now 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. Subtract this, we get 0. Bring down 4. Now again 4 1 जा 4. Subtract this, we get answer as 0. So 4 11s are 44. Simple. So in this way you have to solve the division sums. Hope you understood all the division sums. If you have any query, reach us to the comment box.